previous lecture. I'm assuming कि तुमको थोड़ा बहुत तो याद है उसका कि हमने क्या किया था, right? For today's lecture, ideally हमारा कोई relation नहीं है if you guys have even not revised and that's why I'm not taking viva. ये कुछ लेना देना नहीं है पीछे जो भी concepts हमने पढ़े उसका और इसका, because today what we are understanding is how exactly evolution took place on Earth is what we are studying right now. So when we talk about how exactly evolution took place on Earth, it has been said, and we are aware about this fact, that on Earth, life came into existence somewhere around 2 billion years ago. Yes or no? Yes. Which makes up to somewhere around 2000. Yes. Perfect. This was the time where I had first life that came into existence. Yes. Right? Now, in your NCRT, there is also one statement where it is saying that the first life, that the evidence of first life came somewhere around 4 million or 3.5. So that was an evidence, but that was not actually life. उसका एविडेंस मिला हमको कि लाइफ शायद अभी आया होगा, लेकिन लाइफ आया नहीं था. फर्स्ट लिविंग सेल जो हमको, जिसके फॉसिल्स या जिसके होने का हमको कि अब ये हुआ हो सकता है, कार्बन डेटिंग वगैरह देख के जब फॉसिल्स का चीज करके हमको पता चला, तो उससे पता चलता है कि 2000 million years ago there was first life that came into existence. And the first life that came into existence, as we said, is assumed to be which cell? It's a unicellular and prokaryotic cell. And this prokaryotic cell was autotroph or heterotroph? It was heterotroph. First one was assumed to be heterotroph. We are assuming it to be heterotroph on first place. Later on, which evolved to become autotroph. How do we know that, sir? Is because we realized that there was oxygen which was released. Like photosynthesis, there was oxygen which was released. And we also found out that mini water cycle like or mini photosynthetic cycle like thing that was taken place at that particular era. Which time are we talking about? 2000 million years ago के बाद में कुछ ऐसा होता होगा, ऐसा हम assume कर रहे हैं बेटा, ठीक है, कि ऐसा हुआ था. अब एग्जैक्टली हेटेरोट्रोफ जो है वो ऑटोट्रोफ कैसे हुए, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है या इसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बट हम खाली ये मान के चल रहे हैं या हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है और जो हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च किए हैं उस पे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहला जो धरती पे आया था वो एक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म था, और उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन से वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मिला अपने को, लेकिन कैसे वो अभी भी हमको नहीं पता. क्या एवोल्यूशन हुआ, क्या चेंजेस हुए, all those things are yet not clarified or clear with us. Post that, somewhere around 5,000 million years ago, sorry, 500 million years ago, which is almost तुम देख सकते हैं 1/4 ही पुराना हो गया ये, मतलब काफी समय तक ये सारे एवोल्यूशन चल रहे थे. उसके बाद 500 मिलियन साल पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स इस धरती पे काफी ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे थे, मीनिंग they started proliferating a lot, they started dominating on land. यानी कि यही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, all unicellular organisms evolved to form multicellular organisms. Now when we are talking about multicellular organisms, here we are discussing about all multicellular organisms which includes an invertebrates, specifically spongy अपना sponges हो गया या poriferans basically is what we are trying to explain over here. Poriferans हो गए, hydra हो गए, lower coelenterate हो गए, ये सारे 500 million years ago evolve हुए थे, ऐसा हम assume कर रहे हैं. And 350 million years ago, somewhere around 350 million years ago, कहा जाता है कि jawless fish इस धरती पे dominate करने लगे थे. Jawless fish was dominant somewhere around 350 million years ago. Along with jawless fish, we also had ferns, tall ferns that started dominating on Earth. जमीन पे
जो ट्रीज थे, बड़े बड़े प्लांट थे, बड़े बड़े फर्न्स यानी टेरिडोफाइट्स जो थे वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहे थे, यानी अलगे वगैरह तो बहुत पहले ही आ गए थे, ठीक है, लेकिन उसका अपने को एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, जीडीपी में दिया है, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हमारे पास जीडीपी नहीं है, हम खरीदे नहीं है अभी तक। So I'll give you the information of GDP, but once we get done with complete what NCERT states, ठीक है, because GDP का आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं देखने हैं, खाली ऊपर ऊपर का रिव्यू देखना है इसका। So over here it states that 350 million years ago we had tall trees and ferns that dominated on Earth, and also jawless fish that started dominating on Earth. So jawless fish will obviously be aquatic life, and land will be what? Terrestrial organisms, which is land is terrestrial of course, but land पे कौन dominate कर रहा था? Tall trees, which were basically ferns that were dominating, not gymnosperms but ferns that were dominating there. ठीक है, अब ये हुआ 350 million years ago. धीरे 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 जो समय और गया ना, कहा जाता है कि उस समय पे जो फिश थे ना, जॉलेस फिश, ये जॉलेस फिश के पास स्टाउट होता था. You know what is stout? Fish which do not have mouth has something called stout. Stout is a long structure like this. Dolphins देखे, उसका ऐसा लंबा होता है, right? That is nothing but stout, जिसका ऐसा लंबा चोंच जैसा माउथ रहता है. तो कहा जाता है कि स्टाउट फिश जो थे वो इस पर्टिकुलर एरा में, जॉलेस थे, वो इस पर्टिकुलर एरा में बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड थे, बहुत ही ज्यादा, और काफी समय से वो बाद में एक्सटिंक्ट भी हो गए, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे थे. तो इनके पास ना स्टाउट हुआ करता था और प्लस स्ट्रॉन्ग फिन्स हुआ करते थे, और कहा जाता था कि इस स्टाउट के द्वारा वो जमीन को खोद देते थे और अपना घर बनाते थे. ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग उसका स्टाउट होता था. ये भी कहा जाता था कि क्योंकि उनके फिन्स स्ट्रॉन्ग थे तो इनके पास कैपेबिलिटी था कि ये पानी के अंदर से उठ के जमीन पे आए और जमीन से वापस पानी में जाए, मीनिंग मिनी एम्फीबियन सॉर्ट ऑफ, सेमी एम्फीबियन सॉर्ट ऑफ लाइफ जीना शुरू कर दिए थे लोग. सो दीस वर द फर्स्ट वन. और ये जो फिश जो जिसके पास स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स होते हैं, जनरली इस फिश को हम कहते हैं लॉब फिन्स. क्या कहते हैं? लॉब फिन्स. सो एक लॉब फिन व्हिच इज सिलाकांथ, जिसको हम अज्यूम किए थे कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. समवेयर अराउंड इन 1938 हमें साउथ अफ्रीका में इसके रिमेन्स मिले थे, मतलब जिंदा मिला था, रिमेन्स नहीं मिला था, जिंदा हमने इसको देखा हुआ था. We found it alive. There was a specimen of it that was found alive during this particular condition, and that's when we realized that though we are assuming that jawless fish which dominated aquatic life on Earth in somewhere around 350 million years ago, and they were extinct probably, but that's not so. We still have some organisms of those lobfins which are still existing on Earth. One example is Silakan, which was found to be swimming and alive very well in 1938 at South Africa, if I'm not mistaken. Yeah, it's South Africa. Are we clear? These organisms only, ये जो सिलाकांत वगैरह था, कहा जाता है कि यही organisms जो थे वो आगे जाके amphibians बन गए थे. These were the amphibians that came on Earth. अब ये जो amphibians बने थे, they started laying eggs. Of course, they are egg layers ना. Amphibians are egg layers. अब सीन क्या होता था कि ये amphibians का ना हमारे पास कोई evidence नहीं है. Fossils में भी हमारा एनसीईआरटी बोलता है कि कोई evidence नहीं है इसका कि ये amphibians क्या थे, कैसे थे. बट हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो amphibians exist कर रहे थे तब, log fins वाले amphibians जो exist कर रहे थे तब, इनके descendants समझता है? इनके descendants today what we see are frogs, salamanders sort of, कि वो उनके होंगे, but then exactly वही है या नहीं वो हमको नहीं पता. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हमको पता चला कि यही ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व होके रेप्टाइल्स बने. कैसे रेप्टाइल्स बने? तो कहा जा रहा है कि ये जो एम्फीबियंस थे, these amphibians that we see, इसमें से दो स्प्लिट हुए. कुछ amphibians went back to water and some stayed on land. तो जो amphibians land पे stay किए उन वो they are said to be ancestors
to frog, whereas those which went back into the water are said to be ancestors of aquatic reptiles. They are ancestors of aquatic reptiles. Why are we saying that so? Is because it's been said कि जब ये amphibians land पे आने लगे ना और land पे ही stay कर दिए तो obviously they got converted to what? Land reptiles. Now again in land reptiles को जब हम compare कर रहे थे amphibians के द्वारा तब हम ये notice किए कि जो amphibians थे sunlight की वजह से उनके जो अंडे थे ना वो सूख जाते थे. But then जैसे जैसे टाइम गया और वो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुआ तो इन रेप्टाइल्स के जो अंडे थे their eggs had very thick eggshells due to which they never used to dry in high sunlight. सनलाइट का उन पे कोई असर नहीं होता था. अब जब हम इन रेप्टाइल्स का भी बात करें अगेन वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ दीज रेप्टाइल्स. फॉसिल्स वगैरह में कहीं पे भी इन रेप्टाइल्स का हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है बट हमें इतना पता है कि ये लिजर्ड क्रोकोडाइल इन सब के एंसेस्टर्स होंगे. ठीक है. डिटेल्स हमें अभी भी आज तक उनके नहीं पता कि ये क्या और कैसे होंगे. आर वी क्लियर अप टिल हियर? और लैंड पे जो रेप्टाइल्स रह चुके हैं इन रेप्टाइल्स के भी दो तरीके थे. मतलब लैंड रेप्टाइल्स जो थे दे वेंट अ लिटिल बिट मोर हार्डर मीनिंग somewhere around 200 million years ago 200 million years ago we had large land reptiles that started dominating Earth. Now, large land reptiles, meaning we are here discussing about dinosaurs. Now, in them dinosaurs also, we have a particular dinosaur which is Tyrannosaurus. Tyrannosaurus rex. This particular, तुम देख लो पहले. This particular dinosaur that we have is said to be the tallest animal that was ever existing on Earth. जिसका height was somewhere around 20 feet. काफी बड़े थे height में और कुछ 20 feet height जितने ये हमको दिखाई दे रही है. ठीक है. जो बहुत ही बड़े होते हैं 20 feet मतलब बहुत ज़्यादा हो गया. हम कुछ 6 feet के मतलब मैं नहीं 5.5 feet का हुआ तो you can imagine how tall the हाँ मुझे Are we clear up to here? Now with this particular concept हमें ये भी बताया गया है कि जो aquatic reptiles होते हैं उनके भी काफी सारे अलग-अलग examples हैं हमारे पास. Like for example you have sea cow. You have something like sea cow which is existing. Have you seen sea cow? नहीं ना कोई बात नहीं. There is something like sea cow which is existing, which is said to be as the ancestors of them. And then you also have हाँ तो घुमा के देख लो पहले. Very very important. Okay, there are no details that is as such given to us. Sea cows इधर नहीं आएंगे. Sorry. Sure. Tyrannosaurus is clear है अपने को. ठीक है. We had Tyrannosaurus that came into existence and that's how things went ahead. Also about ferns that I started discussing over here. इधर हाँ. Tall ferns that dominated on Earth. It was not tall ferns that dominated. You had other small plants that dominated on Earth. Plants dominated Earth. क्योंकि तभी Earth पे कोई भी animals नहीं रहते थे. सिर्फ प्लांट्स रहते थे. ये 200 मिलियन इयर्स अगो जो हम बता रहे हैं यहाँ पे जायंट फर्न्स यानी टेरिडोफाइट्स बेसिकली डोमिनेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर टाइम पे. स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे टाइम थोड़ा और आगे बढ़ा वी रियलाइज कि सारे डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए.
ना एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स का क्या रीजन है, डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का क्या रीजन है, तो आज तक हमें पता नहीं कि क्यों एक्सटिंक्ट हो गए। काफी अलग, हर एक साइंटिस्ट का या हर एक इंसान का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है इस बारे में। कोई बोल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसा चेंज हुआ कि जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा बोलता है कि कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफिज्म हुआ है। वी नो व्हाट इज कैटास्ट्रोफिज्म, नेचुरल कैलामिटी कुछ तो हुआ जिसमें सारे डायनासोर्स एक साथ सर्वाइव नहीं कर पाए तो सारे मर गए। कोई ये बोलता है कि जो उनको खाने की चीजें बराबर से नहीं मिल रही थी इसलिए वो मर गया। एग्जैक्ट रीजन क्या है डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने का, ये आज तक हमें पता नहीं चला है। वी आर कंप्लीटली क्लूलेस as to why and how did these got extinct from Earth. Slowly and gradually, after reptiles got extinct, it's been said that you had mammals which start dominating. So we had mammals that dominated after reptiles. रेप्टाइल्स के गायब होने के बाद अलग अलग मैमल्स आने लगे थे धरती पे, जिनमें से सबसे पहला मैमल जो था वो श्रियू जैसा था। इट इज सेड टू बी श्रियू लाइक। यू नो व्हाट इज श्रियू? चूहा देखा, चूहा चूहे जैसे दिखता है ये, ठीक है। जो तुम क्या बोलते पता नहीं, वो छछूंदर होता है ना, क्या जुईली, क्या बोल रहे, किधर है जुईली? हाँ, जुली जुली म्हणता है, मार उनको, काट ही दे आज तो। या सो बेसिकली वो छछूंदर जो होता है उसके जैसा ये होते हैं श्रियूज जो रहेंगे, वो दिखते माउस जैसे ही है, खाली उसका माउथ का जो पार्ट होता है दैट इज स्लाइटली वेरिएंटली डेवलप्ड, ठीक है। तो कहा जाता है कि पहले श्रियूज आए थे, फिर धीरे 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 इवॉल्व होने लगे, फिर धीरे धीरे एलिफेंट्स आए एंड horses आए, all of them started coming up, and it's been said that everyone have their own journey of evolution, everyone have their own story of evolution that took place from one star to another star. एग्जैक्ट किसका क्या है वो डिटेल्स हमको नहीं बताया, और हमको ये बताया कि अगर तुम बीएससी इन ज़ूलॉजी करोगे तो तुमको समझेगा, which we are not doing, so we are not interested। खाली ये बताया कि धरती पे सबसे सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन अगर किसी का है तो किसका होगा? सेल्फ ऑब्सेस्ड हुआ, हम ही सबसे ज्यादा इवॉल्व हुए और हम इतने सक्सेसफुल हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एन एंटायर ह्यूमन एवोल्यूशन इन डिटेल फॉर अस टू डू दिस राइट नाउ। आर वी क्लियर अप टिल हियर? If you understood all the background stories and how exactly the timelines are going up, all clear? Any doubts? कुछ लिखना है बोर्ड से क्विकली। अब ये जो बोर्ड से लिख रहे हो ना तुम, बुक में मत लिखो। I'll tell you when to write things on book, because as of इस चैप्टर में कुछ हम लिखे नहीं है ना, except for Hardy Wienbergs principle I guess। Hardy Wienberg principle पे नहीं लिखे थे, याद है। So basically हमने कुछ लिखा नहीं है बोर्ड से as such। This is the only thing that I'm asking you to write, because जो फ्लो है, अगर इस फ्लो में तुम लिखोगे there might be slight one or two things here and there, वो तुम देख लेना, जब हम रीडिंग करेंगे तब लिख लेना उसको। बट अगर ये फ्लो से बाहर रखोगे तो ये पैराग्राफ काफी इजीली समझ जाएगा कि किससे क्या इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और अगर तुम इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, सुन लेना भाई, सुन लेना, बोल रहा हूँ ना कुछ, मैं बोला चलो लिखो फटाफट, मैंने बोला उसको पॉज कर वीडियो, मरे जा रहे लिखने के लिए, मार्क्स तो ला नहीं रहे वैसा। कितना आया? 270। शर्म आता है? 4 बार कूद इधर से। हाँ, so if you have seen Instagram videos where it's been said, no offense to other religions, I'm just giving an example over here that how evolution took place. So for that you have that concept also, that in different mythological series have these different explanations given to us, and that is one of the way. If you are very into it, you all would realize these concepts are very much related. That the first thing that came on the earth was water animal, which was fish that came into earth. That's what we started over here. That the first animal that came into existence was invertebrates, and we know that all invertebrates, first invertebrate, which is porifera, is a marine organism. Cnidarian again is a marine, aquatic. Then you have something called as Ctenophora, which is again marine. We talk about platyhelminth, Ascalminthus, and annelids. Some of them are aquatic, some of them are on water, right? Then you have something called as arthropods.
Arthropods are water as well as land. Molluscans, water again. Echinoderms, water again. Hemichordates, water again. Your protochordates, you have prochordates, what you call them as, water again. Your cyclostomata, water again. Pisces, water again. So it is fish that firstly came into existence. Mythologically, if you see, जो भगवान के अवतार होते हैं उसमें सबसे पहला जो अवतार था विष्णु भगवान का, that was water, which was a fish. ठीक है, so that's how it came into existence. So if you correlate that, things are exactly the way that happened earlier, according to mythological story we're talking about. Then post that, evolution took place and things came with amphibians. And that's the second avatar that was taken up by Lord Vishnu, where it states about tortoise that came into existence. नहीं बताओगे ना कुछ ये भी? Tortoise was the second avatar that was taken up. Then the third thing after amphibians that comes up is reptiles. Reptiles के बाद there was evolution took place, which comes about with mammals. Mammals में सबसे weakest mammal, which is shrew that we are talking about. Then there was pig and etc. that came into existence. So धीरे धीरे करके जो existence आ रहे थे, the next avatar that came into existence, or rather if I have to say about simple, the next avatar that came into existence was about Varaha avatar, which if you guys are aware is nothing but boar. Boar पता है क्या होता है? Pig जैसा होता है. Pig को ना tusks नहीं होते हैं, they have tusks. ठीक है, so that was the next avatar that took place. And then there was next avatar that took place, which was Narsimha avatar, where it says that the person is neither animal and neither man. So that was ape-like, where it was neither man, it is neither animal. And then finally there was Rama and Krishna avatar that took place, which was complete man. So, and that was also evolved as a animal. So people tend to correlate that also. So this is basically just a gist I gave you, or just small story I gave you, that if you all can remember it that also as a story, तुमको ये सारे concepts याद रहेंगे. याद खाली तुमको dates याद रखने, which is 2000, 500, 350, 200 डन. ठीक है, किसमें क्या हो रहा है वो ऐसे ही फ्लो वाइज से तुमको याद रह जाएगा. पहले क्या आया और बाद में क्या आया वो खाली याद रखना. Sort है. Any doubts? Chalo, quickly copy this down and then we'll go for human evolution. How exactly humans came into existence on Earth? Okay, so there were different types of organisms that slowly and gradually developed and finally came onto Earth. Lemurs, tarsers are different types of animals. Lemurs सुने? लंगूर जैसा दिखता है. टार्सर्स अगेन लंगूर जैसा दिखता है. ये सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो आज भी हमको दिखते हैं, उनमें से हम इवॉल्व हुए हैं. वो पहले नॉन प्रिमेट्स और प्रिमेट्स हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है. धीरे 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 करके हम आए एज प्रीमाटा, वेयर वी हैव एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस दैट कम इन अ पर्टिकुलर फैमिली. When we talk about human evolution, there are some information given in NCERT and GDP, some which are not given in NCERT and GDP, but then flow तुमको पता होना चाहिए करके मैं तुमको दे रहा हूँ इस वक्त. ठीक है, सबसे पहले धरती पे आया था पैरापिथिकस. ये जैसे हम होमोसेपियन है वैसे वो पैरापिथिकस हुआ करते थे. तो पहले धरती पे आया था पैरापिथिकस, फिर आए ट्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, Australopithecus, Homo habilis. Pithecus मतलब they were more ape-like. Homo meaning they are man-like. So we had Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapien fossilis, and then we came into existence, which is Homo sapiens. अब सुनो सीन क्या है. जब हम पैरापिथिकस का बात करते हैं तो पैरापिथिकस के पास तीनों ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटीज थे, which is they were having qualities of monkeys also, apes also and man also. However, they had more qualities like monkeys. When we talk about Dryopithecus, they had qualities again of two organisms, apes and man, but more of apes. Then there was slight evolution because which you have a little bit more of man also.
man-like qualities were also seen in them. इसका सबसे पहला एविडेंस हमें इथियोपिया और तंजानिया में मिला था उनके फॉसिल्स. Their fossils were found in Ethiopia and Tanzania for the first time. And that's where we got to know that you have Ramapithecus also which is existing. Dryopithecus and Ramapithecus came existing on Earth somewhere around 15 million years ago in a particular epoch. जैसे अपना होता है year, month, week. वैसे अगर हम geographical time scale देखें तो the largest one that we have is era, then comes this period and then comes this epoch. So epoch is सबसे narrowed version जहाँ पे ज़्यादातर mammals और humans grow हुए थे. So the first epoch in which you had more of human-like organism coming up into picture were Miocene. So Dryopithecus and Ramapithecus came existing during Miocene or Miocene, whatever you call it as. Australopithecus was again human-ape combination, but it was an exact combination. We call it as Australopithecus because these are the ones which have qualities of both man's and apes. दोनों के in between qualities है. A perfect amalgamation of man and apes is seen here with Australopithecus. Are we clear up till here? Everyone? Oscar. These, when we talk about Australopithecus, these are said to be the first human-like, मतलब more human-like, animal-like, इंसान, human-like organisms that were developed. And इसका फॉसिल सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था, इसलिए उसका नाम हो गया Australopithecus. ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कॉल्ड एज ल्यूसी जहाँ पे सबसे पहले एडल्ट के फॉसिल्स मिले थे, इसलिए उसे हम ल्यूसी मैन भी कहते हैं काफी बार. और उनके बेबीज के जो फॉसिल्स थे वो टोंग नाम एक जगह है वहां से मिले थे, जिस वजह से हम उसको टोंग बेबी भी कहते हैं. These are the first one who learned how to catch their prey by using different types of tools. ठीक है, पत्थर हुआ या लकड़ी हुआ, उसका कैसे हम यूज करके एनिमल्स को वगैरह मार सकते हैं या अपने को जो चाहिए वो हम ले सकते हैं, ये इन्होंने सीखा कि कैसे उसको यूज करते हैं करके. इसके अलावा इनका हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं था, काफी छोटे थे. Their maximum height was up till 4 feet, उससे बड़े नहीं थे ये. And they were found to dwell in East Africa. Now when I say that they were found to dwell in East Africa, थोड़ी देर पहले तो आप बोले थे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं सर. देखो ऑस्ट्रेलिया ये वो सब पहले इनिशियली पूरा अर्थ पे जितना भी लैंड स्पेस था वो एक ही था, धीरे 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 करके सारे लैंड स्पेस अलग होते गए. इसलिए अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने वही पढ़ा कि जब एवोल्यूशन हुआ था तब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी मार्सुपियल्स थे वो जब सेपरेट हुए और ऑस्ट्रेलिया बना, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज इनिशियली पार्ट ऑफ अमेरिका ओनली, बट व्हेन इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अमेरिका उस पर्टिकुलर लैंड स्पेस में मार्सुपियल्स के साथ compete करने के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स नहीं था, इसलिए वो इवॉल्व ही नहीं हुए थे. बट नाउ दे स्टार्टेड इवॉल्विंग. सो लाइकवाइज over here when we talk about we did find their fossils in Australia, but they firstly, but then later on we realized that their remains were also found in East Africa, saying that they dwelled in East Africa more. Are we clear? Yes or no? Yes. They developed in early Pliocene era, the early Pliocene epoch. Then came Homo habilis, which came slightly later to Australopithecus. Homo habilis जो थे वो सबसे पहले humans जैसे दिखने शुरू हो गए थे. However, अभी भी वो पूरी तरह से बाइपेडल नहीं थे, यानी पूरी तरह से दो पैर पे नहीं चलते थे. थोड़ा दो पैर पे चले फिर वापस झुक जाते थे, थोड़ा दो पैर पे चले फिर वापस झुक जाते थे, वैसे थे ये. These are also called as handyman. Why are they called as handyman? Is because वो खुद ही सब बना लेते थे. अब तक कैसे स्टोन वगैरह को ऐसे वेपन यूज करते थे, but then उनसे वो भाला वगैरह जो बनाते थे, जो हिस्ट्री में प्रोबेबली तुमने पढ़ा होगा कि कैसे अलग-अलग tools या weapons they used to use for killing their prey and etc. So how to kill prey by utilizing different tools, how to make those tools, how to make things more easy for us was firstly understood by Homo habilis. And their cranial capacity is considered to be or is seen to be somewhere around 650 to 800 cc. Remember that.
And also these are classified to be as non-meat consumers, though they used to kill animals but they never used to eat animals. वो animals को मारते थे लेकिन उसको कभी खाते नहीं थे। तो क्या करते थे सर, वो उनको छोड़ दो, ठीक है। Then we have Homo erectus, नाम से पता चलता है कि ये पहला आदमी जैसा था जो इरेक्ट पोस्चर लेके चलते थे। अब जब होमो इरेक्टस का बात करें तो इसके फेशियल फीचर्स अभी भी एज जैसे ही थे और इनके फॉसिल्स हमको दो अलग अलग जगह में पाए गए थे, एक जावा में पाया था और एक पेकिंग में पाया था। जावा में पाए गए जावा मैन, पेकिंग में पाए गए पेकिंग मैन, क्लियर है। एंड their cranial capacity was somewhere around 900 cc। ऑब्वियसली अगर इन्होंने कोई चीज डिस्कवर किया तो वो ये तो यूज करेंगे ही करेंगे। So when these were utilizing that, they also ate those animals. So they were the first one to start eating meat after killing them as well. ठीक है, and they came into existence somewhere around 1.5 million years ago, whereas Australopithecus came into existence somewhere around 2 million years ago. 15 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 1.5. Are we clear up till here? Yes or no? Yes. They got evolved in Pleistocene epoch. ठीक है, मिडिल प्लीस्टोसिन एपॉक में वो इवॉल्व हुए थे। उसके बाद आया निएंडरथैलेंसिस, जिसमें सबसे ज्यादा अपने को एडवांसमेंट दिखाई दिया गया। आज हमारे जितने भी रिचुअल्स होता है ना कि मरने के बाद उसके क्या क्रियाक्रम ये वो सब होता है, वो सब इन्होंने शुरू किया। सारे रिचुअल्स जो आज हम फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू हुए थे, इनके थ्रू शुरू किए गए थे। तो जब हम निएंडरथैलेंसिस का बात करते हैं, दीस आर क्लासिफाइड टू बी एज फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन। ये पहले ऐसे ह्यूमंस थे या ह्यूमन लाइक एनिमल्स थे जो काफी ज्यादा सिविलाइज्ड थे, अपने बॉडी को कवर करना जानते थे। तो एनिमल्स को मार मार के उनके स्किन को निकाल के खुद उसके कपड़े वपड़े बना के पहनते थे। प्लस उन लोग घर वर बना के रहते थे, तो गुफा में रहे, मतलब केव में रहे या हट बनाया, झुपड़े में रहना, ये सब इनके थ्रू शुरू हुआ था। मरने के बाद जो बरियल कस्टम्स थे वो सारे इन्होंने शुरू किए। इनके फॉसिल्स हमको ज्यादातर ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाए गए थे, ठीक है। एंड they were found to be existing on earth from somewhere around 100k, which means 1 lakh to 40,000 years ago. K is 1000, I hope you all know that. And their cranial capacity was 1400 cc. Do we need to remember their cranial capacity? Yes, it's given in NCERT, we need to remember. The only part that you don't need to remember is all that is written in red. All those that is written in red is not required for you. ठीक है। एंड दे इवॉल्व्ड इन प्लीस्टोसीन। रेड वाला हमको सिर्फ हमारे बोर्ड्स के लिए याद रखना है। देन कम्स इज होमो सेपियन फॉसिलिस एंड होमो सेपियन सेपियन। हमारा एनसीईआरटी और जीडीबी इनको क्लब करके एक ही चीज बता दिया है, लेकिन एक्चुअली ये दो अलग अलग है दोनों होमो सेपियन ही, लेकिन एक इस वक्त फॉसिल फॉर्म में दिखाई देता है जो एग्जिस्टिंग नहीं है अर्थ पे, और एक हम है। होमो सेपियन फॉसिलिस और सेपियन सेपियन में क्या डिफरेंस है? Fossilists are also called as Cro-Magnon man because they were one of the most smartest man that ever existed on Earth. The cranial capacity of Neanderthalensis and Homo sapiens is same, which is 1400 cc. दोनों का सेम cranial capacity होगा बेटा। लेकिन जब हम Sapien Fossilis का बात करें, इसका cranial capacity 1600 cc था, which is way much more than both of them. So ideally evolution के दौरान अगर तुम देखना चाहो तो सबके cranial capacity increase हो रहे हैं, खाली हमारे decrease हुए। मतलब हमें बुद्धि कम है कैसा? क्रेनियल कैपेसिटी का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। उस हिसाब से अगर तुम देखने जाओगे तो हिप्पोपोटामस हुआ या हाथी हुआ, उसका बुद्धि सबसे बड़ा है because the head is more. That doesn't mean that they are smarter than us. ठीक है? So cranial capacity is just the volume of your cranium. That doesn't mean that it has a larger brain, so it is more smarter. We are saying that they are smarter not because the cranial capacity is more. We are saying that they are smarter is because they were the first one to start with rock painting, ornament making, all this creative वाला चीज यहाँ से शुरू हुआ था। धीरे 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 करके वो पास ऑन हुआ होमो सेपियन के उस पे, जिस वजह से इस वक्त जो अलग अलग मूर्तिकार जो मूर्ति दिखते हैं ना अपने को, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा केव्स वगैरह, जिसमें सब कार्विंग्स किए हैं केव के अंदर, पेंटिंग्स किए हैं केव के अंदर, वो सब यहाँ से शुरू हुआ था सेपियन से। We were the first one, somewhere around 10,000 years ago. Agriculture was started 10,000 years ago. 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर जैसा कुछ होता ही नहीं था।
जो भी उगता था वो जंगल से उठा के खा जाते थे। ये 10,000 साल पहले ये रिवाज स्टार्ट हुआ जहाँ पे हम प्लांट्स को खुद अपनी निगरानी पे रखते हैं, हम उसको पालते पोसते हैं, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तब जाके धीरे 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 करके आज खाने लायक वेजिटेबल्स हमारे सामने दिखाई दे रही है। नहीं तो पहले तो जो भी पेड़ पे था उसी को तोड़ के खा जाते थे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? So that's how you have evolution taken place. When we talk about Neanderthalensis, Pleistocene era, we've said Homo sapien fossils and Homo sapien sapien will club this together and understand that they belong to Holocene epoch, and that according to our NCRT, it states that Homo sapien sapien came to existence somewhere around 75 to 10,000 years ago. We came into existence. So if you just notice, there has been elaborate और lots of years, काफी सालों तक Neanderthalensis और Homo sapiens दोनों साथ में रह चुके हैं, because वो extinct हुए 40,000 years ago, and we came into existence 75,000 years ago. So there was a lot of time, somewhere around 30-35 years तक हम साथ में रह चुके हैं already. समझ पा रहे हैं? ये आंसर ठीक है? So yeah, that's all that we needed to know about how exactly you have human evolution that took place. Now, in this case, many a times, a lot of times, what happens is students tend to forget the sequence of how evolution took place. There's a very sweet mnemonic for that, which is please do remember. Apple has essential nutrients for man. Please do remember, apple has essential nutrients for man. Are we clear? That gives you a simple mnemonic. जहाँ पे अगर तुमको आया कि arrange in correct sequence वगैरह, तो you can answer. So ideally, with this, we end with your evolution chapter completely. There's just one table which is given in your government textbook, which is what we need to discuss. Okay? So that is with regarding board and not NEET examination. ठीक है? वो हमको रटना पड़ेगा क्या पूरा? अगर रट सकते हो तो नीट में कहीं ना कहीं तुमको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा. नहीं रटने को हो रहा है तो भी चलेगा. It's okay, completely fine. नीट में उतना कुछ हार्श चीजें नहीं है. There are just two graphs which are existing right now. सिर्फ दो ग्राफ्स है जो अपने को बुक में दिए हुए हैं. नहीं, आ ये 123, 122 and 123 page number पे. Can you see that? Which gives you plant and animal का evolution sequence. Can you see that? Those are the only two graphs which we are left to discuss. And ideally there is nothing to discuss in that graph. वो जैसा दिया है वैसा हमको याद रखना है. The only information that I can give you is वो जो Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic दिया हुआ है, those are nothing but era that is existing. और उसके आगे जो अपने को Quaternary, Tertiary वगैरह सब दिया हुआ है, those are periods that are existing. उसी के Quaternary दिख रहा है अपने को. Quaternary में और 5 distinctions है. वो 5 distinctions यही वाले हैं. Miocene, Pliocene, Pleistocene, Holocene, and there's one more existing which is not given, Paleocene करके, which is not given to us in our NCERT or GTP, so I did not mention that. Are we clear? Everyone, any doubts? अब इसमें कौन से साल में क्या आया, कैसे आया, ये पूरा ग्राफ हमको रटना पड़ेगा क्या सर? रट लोगे तो अच्छी बात है, because NCERT है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है. Statement based questions इसमें से पूछ सकते हैं क्या? 110% पूछ सकते हैं. ठीक है? ABCD करके आएगा क्या? I don't think so. ABCD करके इस कॉन्सेप्ट पे या इस ग्राफ से तुमको कुछ आ सकता है. But then अगर तुमको आया तो तुमको पता होना चाहिए क्या है कैसा है. ठीक है? ठीक है. अब क्लियर? सॉर्ट है बेटा. चलो लिखे बोर्ड पे जो भी है वो सर. इसको अच्छे से या तो से NCERT में ही कहीं पे जगह ढूंढ के लिखो या फिर बुक में लिख लो as you are comfortable. I would prefer you guys write it in NCERT only so that if there are any changes you can do it by yourself. Like for example यहाँ पे 3 3 6 3 9 है ना, तो यहाँ पे अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे तुमको कंफर्टेबल है वैसा लिख दो. ऊपर के 3 तो छोटे छोटे ही है, वो हम इधर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. बाद में 4th 5th 6th 7th 8th 9th.
ठीक है? That is provided to us over here states that if a population, have you raised this now? वो बता रहा है कि एक पॉपुलेशन है जो 1000 लोगों का है, उन 1000 लोगों में सबसे पहले हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल याद है अपने को? यस और नो? अरे what does Hardy Wienbergs principle explain as? That in a given population, the total number of alleles will always remain consistent, right? So if I have a dominant allele or I have a recessive allele, the total number of them will always remain consistent. Yes or no? If it is capital A and if it is small a, it will always remain consistent. Also, we said that they considered capital A to be as P and small a to be as Q. And they came up with a particular formula which is if it is AA plus small a, together will always be 1. Do we remember that? Yes. According to Mendel's equation, it is 1, 2, 1. Yes or no? Yes. So, what did they do is A को they converted into P or is A को they converted into Q. So this becomes P square plus 2PQ plus Q square equals 1. This was one of the equation given along with an explanation that P plus Q will always be equal to 1. Do we remember that? Yes. This is genotype and uska frequencies. This is allele and uska frequency. Are we clear? अब क्वेश्चन देखो फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं? वो बोला 1000 इंडिविजुअल है जिसमें से there are 360 that belongs to genotype capital A. There are 480 that belongs to capital A small a, and there are remaining of them are 160 which belongs to recessive. It is asking us to find the frequency of allele A. Now when you talk about finding the frequency of allele A, here what do we do is capital A हमें दो जगह पे है, एक homozygous और एक heterozygous. Heterozygous we don't consider, we consider only homozygous here as of now. Now when we are talking about homozygous as of now, how are we calculating? So बता रहा है कि capital A is equal to 360, which is P square is equal to 360, which means P is equal to, okay, wait, let's make it more easy. ये 360 हो गया, right? Now इस 360 को if I have to convert into thousands ratio, 1000 में 360 है, yes or no? Yes. तो एक में कितना होगा? 0.36. So this is in 1000. I want allele of इसका frequency चाहिए ना, which is 1. मुझे उसे 1 में convert करना होगा. So this becomes what? 0.36. So P square will turn out to be 0.36. So P is equal to root 0.36, which becomes P equals to? Get your answer. Simple. Did we understand? Can we try doing rest of them? यही फॉर्मूला यूज करना है, यही दो फॉर्मूला पे घुमा फिरा के अपने को आंसर्स लाने हैं. ठीक है? ट्राई टू सॉल्व. रिकॉर्ड किया था, ये किया दिस रिसेसिव अलील का जो ट्रेट था, रिकॉर्ड ऑन किए. रिसेसिव अलील का जो ट्रेट है उसका फ्रीक्वेंसी 0.20, यानी स्मॉल a will be 0.20, correct? So can I say Q is equal to 0.20? That means P will be 0.80. Did we understand how? P plus Q equals to 1. So that's how it comes up. Now it is asking what percentage of individual in next generation would be expected to show dominant trait. It
is not asking genotype, it is asking dominant trait. So dominant trait will be both, right? Capital A, capital A, capital A, small a, both of them. So P square, if I have to see, it will be 8 is a, yeah, so that will be 0.64. And I have 2PQ, which brings up to 0.2 into 0.8 into 2. That is somewhere around 464 is a 36. हाँ बताओ कितना point. So P square plus 2PQ will bring up to 0.64 plus 0.32, which will bring up to 0.6. Becomes my final answer. That is nothing but percentage में पूछा है. So 96% of the progeny generation will be showing us dominant traits. How many of you all got correct answer? 3 only. Clear the concept? कैसे करना है अपने को solve? चलिए आगे next पे. Frequency of allele A is 0.3. What is the frequency of capital A and small a? Can we solve this by ourselves now? सबके right आ रहे आंसर इस हिसाब से? या you all want to change and modify again? If frequency of allele A is 0.3, so frequency of allele small a will be what? मतलब A is nothing but P का 0.3 है, तो Q का होगा 0.7. Capital A small a का बोला है, which we know it is 2. So that brings up to 0.3 into 0.7 into 2. That brings up to 0.4. Right? That becomes your frequency of allele capital and small a. True? हाँ? हाँ? बोलना रेशियो 2:1 A का सिर्फ कुछ है 2 नहीं. Expected frequency of capital A and small a genotype is asking na, which is heterozygous dominant. So heterozygous dominant is always 1:2:1. So 2 are heterozygous dominant na. P square plus 2PQ plus Q square na. So 2Q आएगा ना. समझे? That is 2PQ. How many of you went to correct? Good. Sure. We'll go to the next. In a population of two alleles from a gene locus P and Q, the allele frequency of P is 0.7. What will be the frequency of heterozygotes? Again, the same question. So here it will be 0.3 plus 0.7 into, it is 2PQ that we have to identify. So 2 into P is given to be 0.7, Q will be 0.3, right? Which still brings up to my ratio as 0.4, and I get my answer to be S. Easy? Next. In a random mating population, frequency of recessive allele is 0.5. What is the frequency of dominant phenotype in the population? ये और ये क्वेश्चन सेम हो गया, खाली नंबर्स चेंज हो जाएंगे उसके. यहाँ पे ये 0.5 है, so that will become point. Are we clear? Yes or no? Yes. समझ रहे? कर पाएंगे इसको सॉल्व खुद से? हमने फिर went wrong, मतलब went correct with this question. Okay. Next, frequency of allele capital A is 0.2. What is the frequency of heterozygous? Again, same. Find the frequency if capital A is this. What is the frequency of homozygous dominant phenotype? Now, when I say homozygous dominant phenotype, meaning I'm asking only about P square, which will bring about to 4 4s are 7 7s are, sorry, 7 7s are. That becomes your answer. Whereas when you talk about recessive phenotype, it becomes capital A, small a and small a. That is 0.3, 0.3. So 0.3, 0.3 becomes 0.09. Are we clear up till here? Everyone?
How many of you went correct with this question? Easy था ये वाला. Clear है? Everyone? Any doubts? Sort? Chalo. So with that we end up. I hope if this kind of question comes up, you'll be able to solve it by yourself. Everyone beta? Yes. Alright, chalo. So with that we finally wind up with the chapter completely. There's just one concept that we are left up, which I told you कि वो GDP का पूरा एक टेबल है. उसका कल हमारा लेक्चर वापस है, if I'm not mistaken. कल नहीं है? परसों है? हाँ बोल रहे हैं. Whenever it is. ठीक है. I suppose आज मेरा लेक्चर तो था ही तुम्हारा. कल. Whenever it is. The next lecture that we have, I'll give you a Xerox of that particular table. Okay? You all sit with the Xerox because I'm expecting not all of you all have. Does everyone have GTP? Yes. How many of you don't have GTP? Yeah, so I'll give you Xerox from your classes today. I'll ask them to get a Xerox. Okay? And you all we can discuss it directly there. Okay? So officially we are done with this. Next lecture I'm expecting you all to solve your MTGN set for the lecture. Alright? जितने NCERT based questions हैं उनको solve कर लो. जो NCERT के बाहर है उसको छोड़ देना. उसको solve मत करने बैठो. ठीक है? Sure. Read करें.